everyone, welcome to my channel and welcome to another video. So today we're going to talk about have to, has to. So where we use have to, has to. Let's talk about it. Have to, has to. When we talk about something which is very important, when some action is obligated to do, when something is required to do, when something is your compulsion to do, so we use have to, has to. So where we use have to and where we use has to, let's talk about it. Assalamu alaikum. So today we are going to learn have to, has to in detail. So let's get started. The usage of the structure have to, has to is we use have to or has to when something is very important to do or something is compulsory to do. It means for necessary action or for compulsion. The Urdu identification of the structure have to, has to are na hai, ni hai, ne hai. At the end of the sentence you will find na hai, ni hai, ne hai. और ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं. Okay, when something is very important to do, ना है, नी है, ने है, and when something is compulsory to do, then the Urdu identifications are ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं. जब कोई काम करना बहुत ज़रूरी हो तो आप ना है, नी है, ने है के मानों में have to, has to को इस्तेमाल करते हैं. और अगर आपने हैव टू हैज़ टू से सेंटेंस बनाया और आप कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ आपकी मजबूरी है करना या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना, कंपलसरी है करना, तो ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं उर्दू आइडेंटिफिकेशन बन सकती हैं हैव टू हैज़ टू की. अब एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि हैव टू कहाँ आएगा और हैज़ टू कहाँ आएगा. आई, वी, यू, दे. अगर आपके सब्जेक्ट्स आई, वी, यू या दे हो, सो यू हैव टू यूज़ हैव टू. But if your structures are he, she, it or any name, then you have to use has to. But keep one more thing in your mind, this has to only comes in the affirmative sentences. If you make negative sentence, then there is no has to. If you make an interrogative sentence, then there is no has to. So has to is only in affirmative sentences with these subjects, he, she, it or any name. So let's talk about the affirmative structure. The affirmative structure is subject, have to or has to. I have earlier cleared that where we use have to and has to. First form of the verb and object. For example, I have to pay my electricity bill. मुझे अपना electricity का bill pay करना है. This means something is very important to do. कोई काम बहुत ज़रूरी करना है. She has to clean whole house. उसे पूरे घर की सफाई करना है. So यहाँ आप इसको compulsion भी बोल सकते हैं. मजबूरी है, उसको करना है. तो उसकी उर्दू यूँ भी निकल सकती है कि उसको पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है या उसे पूरा घर साफ करना है. वी हैव टू टेक सम डिसीजन. हमें कोई ना कोई फैसला लेना है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. कोई ज़रूरी काम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर. इन द नेगेटिव स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज डोंट और डजंट. विद आई, वी, यू, दे वी यूज डोंट. विद ही, शी, इट और अ सिंगुलर नेम वी यूज डजंट. And then have to, first form of the verb and object. As I earlier explained that has to only comes in the affirmative sentences. That's the reason that you can't see has to here in the negative sentence. So in the negative sentences only have to, no has to. Let's talk about the examples. I don't have to pay my electricity bill. मुझे अपने electricity का bill pay नहीं करना है. She doesn't have to clean whole house. उसे पूरे घर की सफाई नहीं करनी पड़ती या नहीं करनी है. वी डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन. हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई फैसला नहीं लेना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. इन द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर वी यूज डू और डज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. नाउ यू नो वेयर टू यूज डू, वेयर टू यूज डज. विद आई, वी, यू, दे वी यूज डू. विद ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम वी यूज डज. Subject, have to, first form of the verb and object. Now you can't see any has to, as I have earlier explained that we never use has to in negative or in interrogative sentences. Has to only comes in the affirmative sentences. So let's take the examples. Example number 1 is, do I have to pay my electricity bill? क्या मुझे अपने बिजली का बिल भरना है? Does she have to clean whole house? क्या उसे पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है या क्या उसे पूरे घर की सफाई करनी है? Do we have to take any decision? क्या हमें कोई फैसला लेना है? So this was have to, has to in detail. I hope everybody understood. Thank you very much.
So hope it was very easy for you and you understood it very well. If there is any questions regarding this structure, so you can ask there in the comment box. I'll get back to you. Thank you.